माय डियर स्कॉलर्स, तो सबसे पहले जो एरिया मैनेजमेंट के डिसिप्लिन में ऐड हुआ रिगार्डिंग मैनेजिंग पीपल was the personnel administration. Let's call it personnel management or personnel administration. Why? Again, the question is that managing people started giving attention to the management scholars. Why? Because it was considered as a factor of production. It was considered as a factor to add profitability. तभी डिस्कशन हुई ना, मैनेजमेंट स्कॉलर्स के दरमियान जब डिस्कशन हुई, रिसर्च की गई, डेटा कलेक्ट किया गया, तो पता ये चला कि नहीं, मैनेजिंग मटेरियल के साथ साथ कॉस्ट को कम करने के लिए जहां प्रोसेस की एफिशिएंसी बढ़ाई जाए, वहां पीपल की एफिशिएंसी भी बढ़नी चाहिए. तो दैट्स व्हाई वी स्पीक ऑफ पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन टू बिगिन विद. HRM उसके बाद की एडिशन है, वैल्यू एडिशन है, जब मैनेजमेंट में इस डिसिप्लिन को वेल एक्सेप्टेंस मिल गई. सो द रिसर्चर्स एंड ऑथर्स of articles in Europe and North America, and of course in subcontinent at that time. Remember, we gave you the example of Tata Industries in those days. So it was a discussion that the ideas and concepts are being developed, and wherever the factories are, the owners, the directors, the managers will learn a lesson from it. So you, as a researcher, propose a theory, propose a concept, come up with a construct, collect the data, prove it, disprove it. And then it becomes a practice adopted by the managers working in the factory. So it was given importance that yes, in the management discipline, new form of management, along with the scientific management thoughts, should be added, should be looked into, should be discussed into, should be researched into. So the management scholars were giving a call, और आज भी आपको मुख्तलिफ जर्नल्स में कॉल फॉर अटेंशन, कॉल फॉर पेपर्स मिलेगी जब भी कोई नया आइडिया इमर्ज होता है कि मुख्तलिफ स्कॉलर्स उस आइडिया पर कैसे बिहेव करते हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं, कैसे सोचते हैं. So management professors, management scholars were giving importance professionally and seriously to the idea of personnel administration. So in other words, we are considering now, management discipline is considering now that managing people is also a productive factor. It is not unproductive. And if it is a productive factor, it is adding productivity which will lead to profit. So at the end of the day, it's good for the organization, it's good for the owner, it's good for the investor, it's good for the person who have invested the capital. इसलिए कि वो तो प्रॉफिट में इंटरेस्टेड है ना. जो शेयर होल्डर्स हैं वो तो अपने शेयर की कीमत के अंदर इंटरेस्टेड है कि वो कैसे बढ़ रही है. लेकिन उसके पीछे अब जो फैक्टर इंपॉर्टेंट आ गया है कि मैनेजिंग मशीन एंड मैनेजिंग मटेरियल, yes, it's important, but to add productivity, managing people is also as important. So personnel administration then, around 1920, personnel administration was considered that it is the direction and coordination, giving direction and coordinating with people for the human relation within an organization with a view to get maximum efficiency. The efficiency के बारे में कोई दो राय नहीं है. So minimum effort, less friction,
and with proper regard for the genuine well-being of the workforce. तो आप well-being of the workforce को importance दें, उनके दरमियान फ्रिक्शन और एफर्ट्स उनकी इस तरह से यूज हो कि प्रोडक्शन पर उसका इफेक्ट ना हो. So the focus in personnel administration is on the human element and the individual person. So let's then consider every person individually. Let's look at his personality. What are the different personality types? आपने पढ़े होंगे. And which person fits which type of work in the organization. लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन की. इन अदर वर्ड्स, मैनेजमेंट थ्योरी के अंदर, मैनेजमेंट स्कॉलरली आर्टिकल्स के अंदर ह्यूमन रिलेशन की मूवमेंट आगे बढ़ रही है. थैंक यू वेरी मच.